Hi. I dropped coffee. ज़्यादा जोर से बैठी क्या? Hello. How are you? क्या हाल है जी आपके? Welcome back to my channel, The Amor Thought. And for the ones who are watching me for the first time, स्वागत है जी आपका मेरे चैनल पे The Amor Thought. मेरा नाम अमोर है, पेनिक, और मेरा रियल नेम देवयानी है. ये पिछली वीडियो में आपको पता चल ही चुका है. सो आई एम नाउ गोइंग टू introduce you with both names and guess what happened just before I started to shoot this video. We hit 200 subscribers finally. Oh my god. और मैंने उसके पूरे होने के गुड हाफ एन आवर तक वेट किया. कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो भाई तू हो जा बिफोर आई जस्ट गेट वे टू एक्साइटेड. क्रॉस 200 सब्सक्राइबर्स. थैंक यू सो मच. It means so much, man. Like अंदर ना shivers आ रही है मेरे को. Oh, thank you so much, guys. Oh, we've crossed 200 subscribers. Oh. यार मई में 50 भी नहीं सोचा था, 200 तक आ गए. We're getting stronger. The Amor army is getting bigger. Whew. This feeling. Oh, this feeling. Whew. और बताओ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ सब सही? रिपोर्ट ओके है? मैं बहुत अजीब सी हो गई हूँ. मैं बोला था मैं रो दूंगी तो मैं पता नहीं वो एक ट्रिप सा आ रहा है अभी भी. इसके पहले कि वो ट्रिप आए मैं ये वीडियो पहले निपटा लेती हूँ. और अगर इस के बीच में आ गया रोना तो मेरी गारंटी नहीं है. बट यार सच अ फीलिंग. और बताओ नवरात्रि कैसी चल रही है? हाय फ्रॉम कॉफी. बताओ नवरात्रि कैसी हो रही है? किस किस का व्रत है ये बताओ. हमारा सही है, हम इस वाले में व्रत नहीं रखते. बंगाली इस नवरात्रि में व्रत नहीं रखते. हमारा होता है वो मार्च अप्रैल वाला जो आता है उसमें. मेरे पास फिलहाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लिप है नहीं, जो मम्मी की एक रखी है फिलहाल, उसी से काम चला लेते हैं. ओके सही. अब आ जाते हैं अपने अवतार में थोड़ा सा. हाँ जी. तो हमारा व्रत वाला होता है द मार्च अप्रैल वाली पूजा. इसमें बंगाली नहीं व्रत रखते. फॉर ऑल द बंगालीज आउट देयर, तवा के खाना ठीक है, कुछ खाली मत छोड़ना, सब खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है. बहुत बहुत पंडाल लगे, बहुत वैरायटी मिलेगी. इनफैक्ट आई डोंट नो इस वीडियो में उस पास में है ना एक जगह पे गरबा हो रहा है, उसकी आवाज आएगी कि नहीं. सो यहाँ पे मेरे घर के पास बेसिकली एक नया स्ट्रीट फूड चौपाटी खुला है. गुड फूड. सो इफ anyone of you who is from जबलपुर and you all want to try some good street side food, कल्चरल स्ट्रीट में एक नई चौपाटी खुली हुई है. You can go there. They have some good food. There is अरे यार एक है ब्रिजवासी की मिठाई का स्टॉल है वो. They have good साबूदाना की खिचड़ी. They have good मूंग दाल का हलवा. ये मूंग दाल का हलवा बाय फार मुझे अभी तक जबलपुर में सबसे अच्छा लगा है. अगर आपको कोई और जगह पता है जहाँ कि मूंग दाल के हलवे का टेस्ट अच्छा, प्लीज बता देना. आई लव मूंग दाल का हलवा. ओके वो बता देना. देन एक पानी पूरी का फूड ट्रक है.
those guys are very nice. That team is very nice. Next time when I go, I'll try shooting them. I'll try putting up a video of that entire space of all those people. Also, that guy who owns the Brijwasi food stall, he also has a cloud kitchen. मेरी उनसे कल काफ़ी देर तक बात हुई. He also owns a cloud kitchen, and so अगर आपको Zomato पे कुछ ऑर्डर करना है उनसे तो आई थिंक फूड मास्टर इज द रेस्टोरेंट नेम ऑन Zomato. ये प्रीपेड प्रमोशन नहीं है. वो उन्होंने कल मेरे को इतनी सारी डिटेल्स बताई थी, एंड आई genuinely like all the people who are working there अभी तक. The chaat stall guys, the sweet shop guys, they're all really nice. Also, अगर आपको लगता है, there is another, in case you've seen my Insta handle, if not, let me tell you, there is a Insta handle called Read on Rent. You can go visit them. They have a lot of books that you can rent from them at 5 rupees per day. And I think that's a phenomenal price to rent a book at. See if you want to go ahead, give them a shot. They also have a book fest on the 1st and 2nd October. I am going to be there. See if you can make it too. Okay? And like all my videos, this is all the information you all did not ask for, and I still gave it to you. आज का वीडियो का टाइटल आपने देख लिया है, थंबनेल आपने देख लिया है. So, मेरे पास कोई स्टोरी नहीं है आज कि मेरे को इस टॉपिक का आइडिया कैसे आया है, बट आई लाइक टू रीड अबाउट पीपल्स वेरियस वेज टू लाइफ, ऑफ लिविंग, वट एवर यू वांट टू कॉल इट. एंड मैं जब होटल इंडस्ट्री में थी, I've had a lot of Japanese guests, a lot of them. And उनसे बात करती थी ना, तब बड़ा एक बहुत इंट्रीग्ड सी फीलिंग आती थी कि यार हाउ इज द पर्सपेक्टिव सो डिफरेंट. एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड अ लिटिल रीडिंग अबाउट द जापानीज कल्चर. अ लॉट ऑफ यू रेड इकिगाई, बट आज के इस वीडियो में देयर इज नो इकिगाई. आई हैवंट टेकन दैट एज वन ऑफ द थिंग्स दैट इंस्पायर मी. उसके अलावा Ikigai se most of you are familiar with. You've read the books. I'm sure you've gone through a few videos also of what Ikigai exactly is. But this is not. And इसमें दो चीज़ें मुझे बहुत पसंद है. And उसमें से एक तो ऐसी चीज़ है जो मैंने I was searching for something else, and then this point happened to come up. And I was like, wow, this is interesting. Okay, तो अब और beat about the bush ना करते हुए, let's get started with the video. उसके पहले इनको भी ऑन कर ले. Okay, so Japanese culture में there are a lot of things that inspire people. They have some really amazing ways towards their life, man. Very, very amazing ways. मुझे कुछ मालूम है, अभी भी मैं I know I have a lot of things to read, and I'm sure इतना content तो मेरे को मिल ही जाएगा कि एक और नया वीडियो मैं इस बारे में बना पाऊंगी. So if you want another video on things that inspire me about Japanese culture, let me know in the comment section below, or on my email ID, or on my Insta handle. Okay? So, to begin with. Now, I don't know, you might have heard of this now. Okay, 2 disclaimers before I get started. Okay? 1, I could be going wrong with the pronunciations. Please don't come on to me and tell me, oh, you took the names wrong. I could be wrong with the names, so in case I am, मुझे please correct pronunciations बता देना.
or let me know a website where I can come across the correct pronunciations. मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है to look for the correct pronunciations, but अगर अगर if I'm still wrong, मेरे को please बता देना. And second thing, मैं अभी जितना बताऊंगी, it is not, I am sure it is not even 10% of this entire thing, but I have tried to pick up the most interesting things about these topics for me to tell you. Okay, I am not being a sabjanta, I am not a सर्वज्ञानी. मेरे को बहुत कुछ नहीं पता है, मैं अभी भी बोल रही हूँ. तो प्लीज अगर कोई भूल चूक हो जाती है तो मेरे को माफ कर देना. कमेंट सेक्शन में प्लीज प्यार से बता देना, मेरे को पेलना मत यार प्लीज, ठीक है? मेरे को वैसे डांट से थोड़ा डर लगता है, तो प्लीज. ओके, सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट is the concept of wabi sabi. So now wabi sabi का जो idea है says that it is okay to be flawed. I've read quite a few quotes around wabi sabi, okay, when I was researching. The one that I really liked is the one by Richard Powell, where he says the concept of wabi sabi can be explained by acknowledging everything that's authentic into three realities, which is nothing lasts, nothing is finished, and nothing is perfect. And it is true. It is amazing how Japanese culture does not run behind perfection. They embrace everything that is flawed, and they are okay with it. They do not say that, okay, you have to be perfect in this, you have to have the perfect jawline, the perfect hair, the perfect score. Nothing. They do not have this idea of attaining perfection. They know that perfection is something that is extremely hard to attain. Very hard. And that is why I think they are very comfortable with everything that is flawed, and they have an admiration to it. उन्हें किसी भी flawed चीज से बहुत प्यार है. So this is, I don't know how true is this, but I read a story around wabi sabi. वो बताती हूँ. There was a guy who was asked to clean an entire garden, and the guy did it. He took his entire day's time and puri scrubbing, sweeping, cleaning, पेड़ों की trimming. He did everything, and by the end of the day, the garden was spick and span. And then he called the owner of the garden, and when he came out and he said, "Oh, this is perfect." The guy goes, the one who was cleaning the garden, he goes, shakes a tree that had a lot of cherries. He shook the tree, a lot of cherries fell down, and then he said, "Now this is perfect because now it has some flaws in it." And I absolutely love this idea. I mean, I don't know हम भी क्यों इतना perfection करते हैं. I think perfection is just what you see. We do not know what perfection looks like. We do not know the way to perfection. So I think this is a great idea of embracing the flaws. Okay, so that is one, wabi sabi. Now second one is the one that I was telling you about. I was searching for something else and I happened to come across this point also. The second point is called Bonno. I hope I'm pronouncing this right. This is called Bonno. Now what is Bonno?
Bonno is something that in Japanese culture, or if I can put it in another way. So every year in the Japanese culture, on the New Year's, 1st of January, they have a bell in their temple which is rung 108 times, 108. Now हम सबको पता है कि हम सबके कल्चर्स में 108 की क्या इम्पोर्टेंस है. वी हैव अ जापमाल विच इज 108. देन और क्या है 108. कहते हैं देवी माँ दुर्गा के 108 नाम है. तो ऐसे 108 बहुत सारी चीज़ें. एंड जापानीज कल्चर कहता है कि एक इंसान में देर आर 108 फ्लॉज और इन what is that, defilements in a person. There are 108 defilements in a person that they need to give up to be able to attain nirvana. And think about it, 108. And I read that list और उसमें इतनी सारी चीजें हैं कि एक इंसान वो 108 पूरा करते करते अपनी पूरी जिंदगी निकाल देगा. So that ringing of bell in the temple on the New Year's is like a reminder to everybody there that my neighbors here, that there are 108 vices that a person should give up or needs to give up. And I love, love, love this idea. I mean, imagine, हमें शायद बहुत चीज़ें समझ भी नहीं आती है. So, okay, I'll do this. ये जो 108 वाला जो आर्टिकल है जिसमें वो पूरी लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट अ पर्सन शुड गिव अप टू अटेन निर्वाणा, I'm going to link that page on the description box, in the description box. Go and read it. I am sure you'll be amazed, as amazed as I am. Okay, तो हम बहुत बार कई बार रुक के सोचते भी नहीं है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं that are a vice to us. And I'm not just considering smoking, drinking, smoking up, or addiction of any kind, गुस्सा वगैरह, ये सब तो है, बट इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है, तो I'm going to link it in the description box. Please read it and see if you like it. Number 3 is gaming. Again, I'm telling you, I might be wrong with this pronunciation. So now gaming का concept is another thing which is very, very sweet to me in a way. मुझे बहुत अच्छा लगा था when I was reading about this. So it is dignity in duress. मैं exactly वही चीज़ आपको बोल रही हूँ कि जब मैं read करी थी और गेमिन के आगे ब्रैकेट में जो लिखा हुआ था उसका ट्रांसलेशन वही बता रही हूँ. It means dignity during duress, which means no matter how bad the situation is, no matter what the problem is, hold on to the dignity, to the perseverance. And तीसरी चीज क्या थी? Sorry, मैं भी भूल गई. And tolerance. Okay, ये 3 चीजें. Just hold on to them. For a lot of people, it does not make sense, but for them, it is their strength. It is their way of telling themselves that it's all going to be fine. And this is at least what they say, that during the World War II, during the tsunami in 2011, they all held on to this one thing, given. And it's not that people over there do not face problems or do not have issues or do not feel blown. They do. But they, every time they
think of speaking about it, first what they consider is that somebody else's problem is bigger than what mine is. And I don't remember the last time I know of somebody who actually considered this. सबको अपनी problems बहुत बड़ी लगती हैं. And this is what I loved about the Japanese culture. And it is extremely inspiring. I don't know if it makes sense to you, but for me, I relate with it. Okay? मैं बहुत बार अपनी बातें बोलने से पहले भी सोचती हूँ कि यार सामने वाले की लाइफ में ऐसा तो नहीं है कि जो मेरी लाइफ में उससे बड़ा कुछ चल रहा हो, वो शायद बोल ही ना पाए. So, and if they ever happen to talk about it, it is always a mutual path that they come onto and decide things on. They never raise their voices, never say demeaning words, never say anything that could possibly be a disrespect towards somebody. और ये तो मैं practical experience से बता रही हूँ. Like I said, I've had a lot of Japanese guests. And यार hotels में चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं. And ऐसा नहीं है that they were not angry. They have been. Because sometimes the things are massive. But they've never said anything disrespectful. Never. गुस्सा हुए हैं शायद, मगर ऐसी कोई बात नहीं बोली है जो एक इंसान को बुरी लग सकती है, या ऐसे किसी तरीके से बोली हो कि एक इंसान को उस चीज से तकलीफ हो सकती है या बुरा लग सकता है. They've always maintained that line. Always. At least as far as my experience with Japanese guests have been. Always. Okay. And last, and number 4 is Kintsugi. मैं जब से इसको पढ़ रही हूँ मेरे दिमाग में किस्टूंगी चल रहा है. ओके, इसलिए एक बार ढंग से पढ़ रही. आई डिड नॉट वांट टू प्रोनाउंस इट राइट रॉन्ग. सो दिस इज Kintsugi. Now Kintsugi in a way is connected to Wabi Sabi. Wabi Sabi was accepting the flaws, accepting things even if they're broken. Now Kintsugi is just a step ahead, and this is the second point that I was telling you that I personally like very much, very much. After Bonno, this is the second one that I really liked. Now the idea of Kintsugi is to put the broken pieces together and make something better out of them. So हमारे यहाँ पे it's a thing that every time something breaks, हम कचरा है बोल के फेंक देते हैं. You would agree, won't you? Japanese do it exactly the opposite. What they do is they mix a little gold dust, a silver dust, or if say they have platinum dust, whatever, they mix it with lacquer and they put the broken pieces together and enhance the beauty of something that was broken into pieces, something that हमारे हिसाब से अब किसी काम का नहीं है. They put it all together and just beautified it. And this is something that works as a life lesson also. Majorly. Every time we're broken, we start second guessing ourselves, we start doubting ourselves, we start thinking, oh, we're useless. No. Breaking is not the problem. What you do out of the broken pieces is the bigger challenge. You could work on yourself and come out as a wonder, or you can choose to stay broken. Up to you. And that's exactly what Kintsugi is about. Every time something's broken, working towards just making that all the more beautiful. Isn't it interesting? मुझे बहुत interesting लगा था. So these were my 4 learnings from Japanese culture that inspired me, that still inspire me.
आई एम स्टिल रीडिंग अबाउट इट. अगर कुछ ऊपर नीचे बोला हो, कुछ गलत बोला हो, तो कान पकड़ के पहले से बोलियो, प्लीज पेलना मत. ठीक है, प्यार से बता देना, सीख जाओगे. मैंने अपने सबसे पहले वीडियो में बोला था कि मुझे सब कुछ नहीं आता, मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ, कई बार ऊपर नीचे होगा, तो जब ऊपर नीचे होगा सिखा देना. ठीक है. मेरे दिमाग में वो 200 वाला चल रहा है अभी. Such a feeling. I'm gonna sleep pretty well tonight. Okay, so this is all the video was about today, and this is going to go up on Friday, which is tomorrow. And then we have a weekend coming up. क्या प्लान है वीकेंड का? अभी तो नवरात्रि भी है, सो काफी प्लान्स होंगे. तो एक बात बताते हैं, नवरात्रि में क्या खाना पसंद है? व्रत के टाइम पे हमारा तो सब चलता है, तो बट आपको व्रत में क्या खाना पसंद है? मुझे साबूदाने की खिचड़ी बहुत पसंद है. मैं आज शाम को भी खा के आई. सेम चौपाटी आज खा के आई. मुझे साबूदाने की बड़ी भी पसंद है. और क्या पसंद है? पता नहीं, अभी इतने व्रत रखे नहीं है जीवन में कि समझ में आता है कि वैरायटी में और क्या क्या है. तो मगर अगर आपको ऐसा कुछ भी है जो व्रत में अच्छा लगता हो, मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में. कैसे बनाते हैं वो भी बता देना, मैं बनाऊंगा, पक्का बनाऊंगा. हाँ, ये है थोड़ी सी दिक्कत मेरे साथ, मैं अचानक घी से गा पे आ जाती हूँ. आई एम की एंड का इन द सेम बॉडी. बैड वन, वेरी बैड वन. तो अब मैं जा रही हूँ. I'm going to edit this, put this up for you to watch, and I hope you like this video. If you did, go ahead, hit the like button. If you think you see that friend in me, thoda sa bhi, go hit the subscribe button and press the bell icon so that you are notified every time a video of me comes up. And if you think this video can help anybody, go ahead and share it. And if you think this video can help you, go ahead and save it. All yours to keep. ठीक है? And before I go, अगर आप इसमें इन 4 चीज़ों में से ऐसा कुछ भी है जो आपको इंस्पायर करता है and you want to put it to use in your life and start transforming your life little by little every day, here and there, remember to be happy. Because like I always say, your happiness matters, you matter, and nothing matters more. And when you doubt yourself, I trust you. And I am very, very proud of you. Okay? I hope you have a good night. I'm going to see you super soon. Super soon. Pakka. ठीक है? चलो. Bye. Good night. I hope you rest well.